Hi dear students, in this class we are discussing about wavy curve method. This is the most important method in mathematics for finding range of a function, domain of a function in the function chapter, relation and function first year and relation and function second year and linear inequality. This is very helpful for finding the range and domain of inequalities, clear? So or solving the linear inequality. So now wavy curve method, what is the meaning of that? Hangandre yena, what is the meaning of that? So it is nothing but, so one by one there are 6 steps are there. Follow that 6 step, you will definitely know about the wavy curve method. So now what is wavy curve method? So the step 1 is nothing but make factors them, whatever the given expression is there, you need to make a factors them. For example, I will consider here the one example, that is, so x square minus 5x plus 6, it is less than or equal to 0 is there, clear up? One expression is there, you need to make a factors plus. So you know already multiplication किया तो 6 आना चाहिए and addition में रेस्ट पर बेका -5. What are those two numbers? -3 and -2. So write it down, x minus 3 and x minus 2. This is, you know already how to find the shortcut values. It is nothing but x square minus 3x plus minus 2x plus 6. So taking common outside, again you will get x minus 3 and x minus 2. This is our first step, clear? The first step is you need to make a factors. And what is our second step? Make coefficient of x as a 1. So here the coefficient of x should be 1, otherwise it is also open. So you upar hai to power, if the power is more than 1 2 hai to you can't do it with. If the power is 1, it is okay to x coefficient x 1 ka hai bhi nahi chalta hai, nahi bhi chalta hai, don't worry. So what about step 3? Find the critical points, means what? You need to find the roots. X minus 3, step 1 is clear, step 2 is clear, then you need to find step 3. What is step 3? Step 3 is nothing but find the critical points. What is the meaning of critical points? The function where it is equal to 0. So x minus 3 is equal to 0, then x is equal to 3. It is a one critical point. And x minus 2 is equal to 0 and x का value क्या आएगा? 2. x value n बनता 2. It means what? X equal to 3 and x equal to 2 is our answer. These are the critical points. And what they are telling? Plot them on number line. What is the meaning of plot them on number line? Take a number line. Which one is a smaller number? You have to take first that one. And second will be the 3. It is clear? This is 2 and this is 3. I hope this is clear up to here. So step 3 is clear. Step 1, step 2, step 3 is clear. So step 1, step 2, step 3. And what is step 4? Mark dot and circle. It means what? Open and closed. You need to find that. So here it is less than or equal to is there. It means what? Closed or open. This meaning, the less than or equal to is there. It means what? Included or excluded. It is only included. It means what? You need to take it as a dot. It is a dot. Dot and circle depends on what? It is less than or equal to or only less than, strictly or slightly. So next step is you need to sign a foot sign if index को defined होता हो. So if index क्या होगा? If index even, then no change. If index odd, then it is change. Here it is no change, here it is change. कैसे आप example में देखेंगे? So you need to remember this side it always be a plus. It will always start with the plus. If it is always start with a plus, then 3 x minus 3 power another, x minus 3 power another 1. 1 is odd or even? Even, oh sorry, odd. So whatever the change or no change, it will be change. Plus become minus. It is clear? Plus become minus. What about 2? 2 solution, x minus 2 power is there. X minus 2 power another 1. 1 means what? Odd. Minus become plus. So plus. So next step is take required. Don't worry, I will explaining only the methods. Whenever you are solving exact example, you will definitely understood everything. So now take required interval.
लेस देन और इक्वल टू है तो इधर इधर आपको एक्सप्लेन करता हूं, इवन है तो नो चेंज एंड ऑड है तो then change. Don't worry about this one, I will explain everything again and again. Take them or take the required interval. Required interval means what? Less than or equal to 0, then you need to take a negative interval. Which interval? Negative interval. If it is greater than or equal to 0, then you need to take a which interval? Positive interval. Here which interval it is? Less than or equal to 0 means what? Less than 0 means what? It is a negative side, negative interval. Where it is the negative interval? So इधर है क्या? नहीं. इधर है क्या? नहीं. इधर 3 लोग है, इधर 1 लोग, इधर 1 बंदा है, इधर भी 1 बंदा है. तो क्या होगा? ये बंदा नेगेटिव किधर है? इधर है, तो इधर से इधर तक है इसका सॉल्यूशन बस. सो ये x बिलोंग्स टू 2 to 3 क्लोज. ये कैसे सॉल्व करना? एग्जांपल्स है, 1 by 1 करेंगे इधर. डोंट वरी. सो रूल्स फॉर इनइक्वालिटी वो भी चाहिए ना. इनइक्वालिटी का रूल्स क्या क्या होता है? तो इनइक्वालिटी का 3 रूल्स होता है मेनली. द फर्स्ट रूल, आप इनइक्वालिटी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो और नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई किया तो वो साइन बिकम चेंज. कैसे? इधर देखो. सो 2 इज लेस देन 3. इट इज क्लियर. आप इसका -2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? -2 into 2 is less than 3 into -2. तो ये इक्वेशन क्या होगा? -4. ये इक्वेशन क्या होगा? ये -3 into -2 है तो क्या होगा ये इक्वेशन? एंड इट इज अ 6. सो नाउ it is a 6 and it is a -4. Then what about this sign? This is -6. And what about the relation between this one? This one is greater or this one is greater? अरे बाबा, this one is greater. तो ये वैल्यू क्या होगा? रिवर्स होगा. It means what? You can divide and multiply to the inequality by negative number. So inequality will be reverse. It is clear? So this is the explanation why it changes. So this is the rule 1. So rule 1, if negative number is multiplied to or divided by to the inequality equation, then equation will be reverse. So what about the change भी लिखो आप, चलता है इधर. चेंज भी लिखे तो चलता है. डोंट वरी, आप चेंज मत लिखो, इसका रिवर्स का चेंज लिखो. एंड नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल क्वांटिटी. वो रैशनल इनइक्वालिटी के बाद में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी एंड रैशनल के बाद वो आते हैं ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाई वी डिडंट क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल क्वांटिटी, बिकॉज वी डोंट नो ना द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी. यस और नो? यू कैन कंसीडर हियर 3 by x is less than 2 by y. If I write 3y is less than 2x, this is the most important mistake also. Most important mistake. कैसे? आपको पता ही नहीं है ना ये x and y क्या है. x and y वैल्यू ना ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? पता नहीं है. It means what? ये x वैल्यू y वैल्यू ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ? Yes or no? So if you know the x is positive, sir, x value positive, then you can multiply x that side. Sir, y value is negative, multiply that side, then equation will be reverse. क्या होगा? कुछ नहीं होगा. आपको पता नहीं है x and y क्या है, पता है तो मल्टीप्लाई करो. वही रूल नंबर 3 हमारा. क्लियर? सो व्हाट इज आवर रूल नंबर 3? क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल क्वांटिटी when you know the sign of the inequality or variable quantity. It is clear? So one by one we will discuss. I hope these 3 rules are clear. You more rules ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? So if any doubts you can comment it. So now one by one we can solve it. So x square minus 3x plus 2 and it is greater than or equal to 0. What is our step 1? Turn up the page. Step 1 is make factors. So factors क्या होगा इसका? x square minus 3x plus 2 is greater than 0. What are the factors of x square minus 3x? x square minus 3x plus 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 आना चाहिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया तो -3x. दैट इज नथिंग बट x square minus 2x minus x plus 2. देन x square minus, सो इधर x कॉमन है, x minus 2, -1 कॉमन है, x minus 2, x minus 1, x minus 2 आर द फैक्टर्स. वही डायरेक्ट बोले ना बाबा में, इसका -2 -1 आया तो कोएफिशिएंट x का 1 है तो x minus 2 x minus 1 लिखो. देन व्हाट अबाउट द आंसर ऑफ दिस वन फैक्टर्स? x minus 1 x minus 2. This is our first step. And what about step 2? The step 2 is nothing but
make coefficient as a 1. वो तो है ही है ना already. X coefficient है ना था 1 ना था already है ना. Then what about step 3? Find the critical points. What is the critical point? 1 and 2 and take it on the number line. So 1 and 2. So next, अरे समझे क्या नहीं? Step 1 क्या है? Make factors. Step 2 क्या है? Coefficient of x should be 1. Step 3 क्या है? Find the critical points. ये क्या है? Critical points. What are the critical points? 1 and 2 and take it on the number line. Take किया तो next ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? Step 4 dot and circle. इधर देखो ना, greater than or equal to 0 is there. So greater than or equal to 0 is there. इसका मीनिंग क्या होगा? Equal है ना. It means what? Included. क्या होगा? Included. Then included तो this will be the dot and this is also a dot. And what about the sign of the inequality? That is nothing but a step 5. What is the meaning of step 5? Here it is, you got the x1 2 and a dot. Next क्या होगा? You need to start from the plus and minus, the sign of the inequality. So either it should be always a positive. Whatever the it will started है ना right side. This is always a positive need to take and a positive है. अभी हमारा 2 then तो बेका 2 x minus 2. इसका power क्या है? Index क्या है? ये नहीं तिले 1. So if it is 1, it means what? Odd. Odd means what? Odd है तो क्या होगा? Change. Then what about even? No change. It is clear? So change and no change. Plus है तो minus होगा. And what about x minus 1 power? That is also what? A minus become क्या होगा? Plus. अभी आपको कौन सा इंटरवल चाहिए? इधर 3 इंटरवल है, 1 अरे 2 एंड 3. These are the 3 इंटरवल. तो अभी कौन सा इंटरवल लेना पड़ेगा? इधर कौन सा इंटरवल लेते हैं आप? सो अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इधर ही आपको पता है ना ऑलरेडी. इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पॉजिटिव इंटरवल, इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 0 नेगेटिव इंटरवल. तो ले लो कौन सा लेते हैं आप अभी? इधर तो ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव इंटरवल. इधर से इधर तक, इधर से ऐसे ही गया तो इसका मीनिंग क्या होगा? इधर माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी. इट मींस व्हाट? ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव इंटरवल. सॉल्यूशन क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से 1. सो इट मींस माइनस इंफिनिटी टू 1. क्लोज्ड और ओपन, ये वाला डॉट है ना तो क्लोज्ड. यूनियन तो क्लोज्ड और ओपन, क्लोज्ड. 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी. ये इंफिनिटी है ना, ऑलवेज अ ओपन. दिस इज नथिंग बट x बिलोंग्स टू. This is our solution. I hope it is clear. Gotaitala. So order and even. So again you need to follow the step, required steps. Clear? So you need to follow the steps. You will get everything. So whatever the example is there, how much time big it is, so we will get the answer. This will be very helpful for our JEE mains because finding the range and Kcet also. Finding the range of the function or domain of the function, there you can use the this one. Or if they ask linear inequality also in the Kcet, you can use it also. Clear? So now x minus 4 whole square, x plus 6 whole cube, x minus 1 and less than or equal to 0. Very simple. So they are already given. It is in the form of the step 1, step 2. Factors है, coefficient of x is 1. It means what? Step 1, step 2 solved. And what about step 3? Take a numbers on roots. You need to find roots. X equal to 0, x equal to 4, x equal to minus 6. इधर फाइंड करना पड़ेगा इसका वैल्यू. बस डोंट बी कंफ्यूज. इसका वैल्यू 0 आएगा. x माइनस 4 इक्वल टू 0 किया तो इसका वैल्यू क्या आएगा? x इज इक्वल टू 4. x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 किया तो x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू माइनस 6. x माइनस 1 इक्वल टू 0 किया तो x का वैल्यू 1. These are the critical points. What are the critical points? 1, 2, 0, 4, minus 6 and 1. These are the critical points. How many it is? How many there are? 1, 2, 3, 4. Take them on the number line. So which one is the smallest number in out of these all numbers? So minus 6 is the smallest number. Take minus 6 first. Next, which one is greater than minus 6? 0. And next, you need to take
1, and you need to take 4. These are the numbers and these are on the number line. Now you need to take a dot and circle. Step 3 is clear. And step 4, dot and circle. Here it is less than or equal to is there. Yes or no? Less than or equal to is there, then क्या होगा? Less than or equal to is there, then क्या होगा? It is a dot or circle. Dot. So this is also dot. This is also dot. And this is also dot. And this is also dot. Clear? So now these are all dot. So now you need to find the plus or minus. That is the step 5. What is step 5? Put a sign. Sign कैसे put करते हैं आप? ये तो plus से start होगा. Next, you need to find the powers. So what is the 4 power? 4 किधर आएगा? इधर आएगा. X minus 4. इधर power है ना 2. X minus 4 का power 2 है तो even or odd. This is even or odd. So either I will find here, right here. So it is even. It is odd. It is odd. And it is also odd. It means what? X minus 4 का power क्या है? Odd है. Odd है तो क्या होगा? और sorry, even है. Even है तो same. Plus become plus. So plus become what? Plus. It become what? Plus. Plus इधर देना है तो plus side. And what about the 1? 1 किसका solution? इसका solution. X minus 1 power है ना 1. 1 means what? Odd. Odd means what? Change. Change means what? Plus become minus. Clear? You can write below the line. Don't worry. It become what? A minus. It is a minus. Now you need to take a 0. 0 power क्या है? Odd. Odd means what? Change or no change? No change. Sorry, change. Minus become plus. Minus 6. ये minus 6 का power 3 है. 3 बोले तो odd. Odd means what? It will be a change. Plus become minus. Clear? So now you need to take a required interval. Step 6. I hope step 5 is clear. So step 6 क्या है? Less than or equal to 0. Less than or equal to 0 means what? कौन सा interval? Negative interval. And greater than or equal to 0 means what? Positive interval. सोचना पड़ेगा आप, जरा सा याद करना पड़ेगा. Next. So now which interval our question is? So less than or equal to 0. It means what? नेगेटिव इंटरवल. नेगेटिव 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 किधर है वो देखो, वो ले लो बस. सो इधर है नेगेटिव माइनस इंफिनिटी से -6. इट मीन्स व्हाट? दिस इज द वन इंटरवल. एंड नेक्स्ट विच इंटरवल? इधर से इधर तक. बस क्लियर है? सो यू नीड टू टेक द दिस आंसर. इधर से इधर एंड इधर से इधर. क्लियर? सो नाउ यू नीड टू राइट माइनस इंफिनिटी टू -6 विथ क्लोज्ड union and 0 to 1 with closure. Clear? Is there anywhere? No. So this is our x belongs to. So this equation will be less than 0 where x belongs to this value. This is the meaning of the solution. Clear? So x value you viddu andre ashtena ee equation ena less than 0 bartada. Clear? So next, this example you can solve it. Clear? So what are the first step and second step? Clear. Step 1 clear. So step 2 is also clear. Step 1, step 2 are clear. What are the critical points? X equal to 0, x equal to -3, x is equal to 7. Now you need to check for powers. इधर ही check करो ना. Powers सबका क्या है बाबा? Odd है. Odd इतंद्र ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? Odd इतंद्र क्या होगा? Odd इतंद्र change. So plus minus ऐसा ही जाएगा. Don't worry. Directly I will put the number line. So here take a number line and take the points -3, 0, 7. All are dot or circle. इधर देखो ना, greater than 0. It means what? It is strictly greater than 0. It means what? Circle. AB circle, AB circle. This is also circle. Circle, circle, circle. Then क्या होगा? Circle. Next you need to take the points. So इधर already आपको पता है. क्या पता है? इसका powers क्या है सर? इसका power है odd. Odd है तो क्या होगा? Plus minus. It means what? Every value will be changed. So this will be minus, this will be plus. So now which interval you are taking now? So it is greater than 0. Greater than 0 means what? Positive interval. Clear? So it is a positive interval. Where it is positive interval? Where are there?
सो इधर से इधर तक, इधर से इधर तक. Is there any positive interval rather than this? Nothing. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಐತೆ ನಾ ಇಲ್ಲ. So what is the solution of this one? -3 open open, and this is also 7 to infinity open open. This is the union. Clear? So in दो स्टेप में आप कर सकते हैं इसको. क्लियर? इजी है. नेक्स्ट ये वाला, ये भी कर सकते हैं ना आप. x किसका? x² - 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 0. तो a² - b² लिख सकते हैं ना इसको. देन x ऐसे ही लिखो बिकॉज इट इज x, एंड x² - 1 कैसे लिख सकते हैं आप? x - 1 x + 1, इट इज लेस देन और इक्वल टू 0. सो आप ऐसे लिखे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? द फर्स्ट स्टेप इज क्लियर. यस. स्टेप 2 इज क्लियर. यस. एंड व्हाट अबाउट स्टेप 3? फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड मेक देम ऑन द नंबर लाइन. So what are the critical points? So x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to -1. These are the critical points. These are the critical points. And take it on the number line. So -1 first, 0 and 1. So it is less than or equal to 0. Less than or equal to 0 is there. Then क्या होगा? Then क्या होगा? The interval is क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू है तो क्या होगा बाबा? डॉट, नॉट अ सर्कल. डॉट है तो क्या लेना पड़ेगा? डॉट. सो डॉट ले लो. क्या होगा? डॉट लिया तो इधर भी डॉट, इधर भी डॉट, इधर भी डॉट. सो डॉट डॉट डॉट. नाउ डॉट डॉट डॉट. तो क्या होगा? इसका वैल्यू प्लस से स्टार्ट होगा. सबका पावर क्या है? सबका पावर 1 1 1. All powers another 1. 1 means what? Odd. Odd means what? Change. तो ऐसे ही चेंज करके आओ. प्लस माइनस प्लस माइनस. क्लियर? प्लस माइनस आता रहेगा. नेक्स्ट इदेनाता नेक्स्ट. सो यू नीड टू टेक अ रिक्वायर्ड इंटरवल. लेस देन और इक्वल टू 0 इज देयर. लेस देन और इक्वल टू 0 इज देयर. देन क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू 0. विच इंटरवल? नेगेटिव interval. Clear? So this is the negative interval. So now we can write it as a negative interval. So negative interval किधर किधर है? इधर से इधर तक, इधर से इधर तक. इधर एक बंदा है, इधर एक बंदा है. वो किधर रुके? ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಾನವ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತಾನ. So this value is -infinity and this value is +infinity. Then -infinity to -1 with closed and with union and 0 to 1. This is clear. This is x belongs to the value. Clear? This is the our Wavy curve method. So I hope these are the clear. 2 minus x is there and x minus 5. This is the MCQ question. Important. ये 2 minus x, x का कोएफिशिएंट क्या है? इधर -1 है, तो उसका आंसर क्या चाहिए? 1 चाहिए. तो 2 minus x है, तो नेक्स्ट x minus 5 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये 2 minus x को आप x minus 2 लिखे तो माइनस बाहर आएगा. ये x minus 5 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये माइनस आप उधर भेजे तो और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? x minus 2 x minus 5 and this will be less than or equal to 0. Why it is less than or equal to 0? समझे क्या नहीं? So इधर less than or equal to, ये माइनस हटा दिया, ये माइनस ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಾ? ಲೆಸ್ ದನ್ 0. इफ इट इज माइनस देयर देन इट इज ग्रेटर देन 0. इट इज द ओनली डिफरेंस. सो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है 2 एंड 5. तो टेक अ नंबर लाइन 2 5 लेस देन और इक्वल टू 0, देन इट इज डॉटेड and it is dotted. It is clear? So now take plus or minus. So here it is, दोनों का पावर क्या है? 1. तो प्लस minus plus. Clear? So now you need to take which interval? Less than or equal to 0, negative interval. So negative interval means what? So only this interval. So इधर है ना एक ही बंदा है, तो कौन सा बंदा? 2 to 5. So आपका सॉल्यूशन क्या है? क्लोज इंटरवल 2 to 5 है क्या ऑप्शन में? क्लोज इंटरवल ऑप्शन सी. चिल्ली किया आप, चमक चमक चलो करो इधर. क्लियर? सो इधर आपका सी ऑप्शन. क्लियर? नेक्स्ट. सो व्हाट अबाउट दिस वन? इधर देखो क्वेश्चन क्या है? 3x + 2
इधर इसका पावर 1 है, चलता है, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो भी चलता है, नहीं है तो भी ये 2/3 होगा, बस डिवाइड बाय 3 किया तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 किया। एंड नेक्स्ट x माइनस 1 स्क्वेयर x माइनस 4 लेस देन 0, आप इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 किया तो क्या होगा, डिवाइड बाय 3, सो ये इक्वेशन क्या होगा, x प्लस 2/3, तो इट मीन्स व्हाट, यू विल गेट एवरीथिंग। सो फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, स्टेप 1 स्टेप 2 इज क्लियर। सो x इज इक्वल टू माइनस 2/3, ये मिस्टेक आप करते इधर डायरेक्टली -2 लिखते। एंड इसका सॉल्यूशन 1, इसका सॉल्यूशन 4, टेक अ नंबर लाइन a minus 2/3 and next 1, next 4. Now take a dot and circle. So it is strictly less than 0, it should be circle, it should be circle. Now take a positive negative. So now it is a पावर, देखो ना 4 का पावर क्या है, 4 का पावर 1 है, तो ये तो प्लस से स्टार्ट होता, प्लस बिकम माइनस, बिकॉज 4 का पावर क्या है ऑड, प्लस बिकम माइनस, एंड माइनस बिकम क्या होगा 1, 1 का पावर क्या है 2, ये माइनस बिकम अगेन अ माइनस। नाउ 3x प्लस 2 का पावर क्या है 1, 1 मीन्स व्हाट ऑड, ऑड मीन्स व्हाट माइनस बिकम प्लस, तो दिस इज आवर रीजन। Clear? Now which interval you need to take? Less than 0. Less than 0 means what? Which interval? It is a negative interval. Negative किधर किधर है, सिर्फ इधर से इधर एंड इधर से इधर, देखो ना -2/3 ओपन एंड 1, दिस इज ओपन नॉट इंक्लूडेड, ऐसे फुल नहीं लिख सकते आप, अगेन यूनियन 1 से 4 तक, ऐसे भी लिख सकते और ऐसे भी लिख सकते, -2/3 to 4 ओपन -1, ऐसे भी लिख सकते, दोनों लिख सकते आप, दोनों हाथ से लिख सकते, वो तो है क्लियर है, कैसे लिख सकते आप हाथ से, क्लियर। सो दीज आर आवर आंसर, सो वेरी इजी है, तो ऑप्शन में है तो देखो, नहीं है तो ये लिखो बस, ऑप्शन सी, क्लियर, -2/3 to 1 and 1 to 4। सो next x plus 6 x plus 2 whole square x minus 3 and it is greater than 0, I will give the critical points, x equal to 0, x equal to -6, x equal to -2, x equal to 3, so I will just take the number line and which one is the smallest number, -6 -2 0 and next 3 and dot or circle, सबका सर्कल ग्रेटर देन है ना, स्ट्रिक्टली सर्कल सर्कल सर्कल, विच सर्कल, चरनावा सर्कल। नेक्स्ट क्या होगा, ए पॉजिटिव से स्टार्ट होता, तो पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ तो 3 का, 3 पावर क्या है ऑड, ऑड है तो प्लस बिकम माइनस। नेक्स्ट ए 0 क्या है इधर, 0 का पावर, x का पावर क्या है 1, 1 इज ऑड, माइनस बिकम प्लस। नेक्स्ट -2, इसका सॉल्यूशन x प्लस 2 स्क्वेयर इज देयर इवन नंबर, देन क्या होगा, इट बिकम अगेन अ प्लस। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट प्लस -6 का पावर क्या है ऑड, ये प्लस बिकम माइनस, दिस इज ग्रेटर देन 0, देन विच इंटरवल, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, बोले तो -6 से -2 एंड -2 से 0 यूनियन 3 से infinity, this is the x belongs to, clear, this is our solution, clear। so step by step किया तो आसान से होता है, you need to remember the step। next rational inequality, p by q form, what is the p by q form, तो ये p है, a divided by p है, इधर एक रिमेंबर करना बस, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಏನಂದ್ರ रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर वाले सर्कल, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर वाले मीन्स व्हाट, इसका रूट्स आते हैं ना बाबा, इसका रूट्स आते हैं ना, इधर ग्रेटर देन 0 है तो उसका डॉट नहीं लेना, क्या लेना, सर्कल लेना बस, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಡಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಡಾಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ, ಸರ್ಕಲ್। सो अभी देखो x -1 x + 5 x + 2 सबका कोएफिशिएंट x का 1 है एंड ऑल आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स ठीक है नहीं, सब लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर दावा। सो नाउ टेक डायरेक्टली द क्रिटिकल पॉइंट्स, x = 1 x = 5, these are the numerators nurs, and what about the denominator, x = 0 x = -2,
ಇವೇನಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಯರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ತಾವ ಜೀರೋ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದೇನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೆವರ್ ಬಿ इक्वल टू जीरो बिकॉज दिस का रूट्स आर नेवर बी इक्वल टू रूट्स बोले तो डॉट नहीं है सर्कल ओपन होगा ये यू नीड टू टेक ऑन द नंबर लाइन सो नंबर लाइन में बड़ा 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 बड़ी नोडोना सो व्हाट आर द वैल्यूज सो -2 is the smallest 0 1 and 5 these are the numbers now you need to take a dot and circle ऊपर का सबका तो डॉट ही है सिर्फ नीचे का सर्कल है नीचे का कौन कौन 0 -2 0 का क्या होगा ओपन -2 का क्या होगा ओपन बाकी का तो क्या होगा सॉरी ये क्या है डॉट ये डिनोमिनेटर वाले सर्कल न्यूमरेटर वाले डॉक्टर वाली सर्कल डॉक्टर न्यूमरेटर नर्स वाला डॉट क्लियर सो नाउ यू नीड टू टेक अ प्लस माइनस दिस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ प्लस ये सबका पावर क्या है सबका पावर 1 1 1 ऑड है ना प्लस आगा ना माइनस आगा ना प्लस माइनस प्लस सॉरी माइनस एंड अगेन इट इज प्लस क्लियर सो प्लस माइनस प्लस क्लियर so now you need to take the required interval greater than 0 is there greater than 0 means what positive interval so positive interval means किधर किधर है इधर से इधर इधर से इधर इधर से इधर इधर से इधर कौन सा माइनस इन्फिनिटी से -2 ओपन एंड नेक्स्ट यूनियन ये वाला ओपन 0 0 से 1 तक विथ क्लोज्ड यूनियन ये 5 to infinity this is the solution of the given expression clear so easy है but practice करना पड़ेगा इसमें रूट रैशनल में आया तो क्या करना पड़ेगा रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर whatever the वाली और वाला so और वाले इसका क्या करना पड़ेगा सर्कल नेक्स्ट ये बहुत आसान क्वेश्चन है आसान है सर तो सॉल्व करो देखो ना 3x³ 2x² divided by x² minus x minus 30 and it is greater than or equal to 0 make the factors बस so इसमें कॉमन क्या है ऊपर का x² कॉमन ले लो x² minus 3x plus 2 पहला एग्जांपल था ना हमारा तो x² minus x minus 30 so मल्टीप्लाई किया तो -30 आना चाहिए एडिशन किया तो -1 वो दो नंबर कौन सा -6 plus 5 -6 plus 5 yes or no these are the numbers clear so now you need to take a factors of this one what are the factors so x minus 6 x plus 5 it is greater than or equal to 0 ऊपर का देखो ना x minus 3x plus 2 पहला एग्जांपल इतना था ना x² minus 3x plus 2 का था ना क्या हो x minus 2 x plus 1 divided by x minus 6 x plus 5 it is greater than or equal to 0 now you need to take a number line and critical point so what are the critical points here so x² means 0 x minus 2 2 x plus 1 minus 1 x minus 6 6 x equal to -5 ये वाला क्या होगा ओपन एंड ये वाला क्या होगा डॉट clear so take number line which one is the smallest number -5 next -1 0 2 6 the first number is -5 and second number is -1 next 0 next 2 next 6 so अभी प्लस सा माइनस सा डॉट है सर्कल ला लेना so 0 2 -1 0 2 -1 ये क्या होगा ये तीनों डॉटेड बिकॉज ओनर्स है ना next and what about 6 minus 5 6 minus 5 are always open these are also open clear so now you need to take a required interval कौन सा greater than or equal to 0 है greater than or equal to 0 है तो क्या होगा greater than or equal to 0 it is plus minus नहीं plus greater than or equal to 0 बोले तो plus interval before that you need to find the put a sign this is plus and next 6 का पावर क्या होगा 6 x minus 6 इसका पावर क्या है 1 है ऑड
plus become minus. Next a2, 2 का पावर a2 का पावर क्या है, odd. odd बोले तो plus, minus become plus. 0, x square है, x square बोले तो even number, ये plus become plus. clear. next किसका, -1 का. ये -1 पावर क्या है, odd. odd बोले तो होता क्या, प्लस बिकम माइनस. ये माइनस बाई भी ऑड है ना, माइनस बाई भी प्लस. अभी ग्रेटर देन 0 बोले तो कौन सा इंटरवल लेना पड़ेगा, ये इंटरवल कौन सा, अभी ये चलेगा, ये इंटरवल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला. अब लिख सकते क्या इसका सॉल्यूशन, इसमें ऑप्शन में लिखो, कमेंट करो. क्लियर. प्लीज कमेंट द आंसर और सेकेंड क्वेश्चन रैशनल इक्वालिटी. कमेंट करो इसका आंसर देखेंगे. क्लियर. सो कमेंट करो इसका क्या आएगा, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, कौन सा ऑप्शन आता है देखेंगे. क्लियर. सो जस्ट कमेंट द ऑप्शन ऑफ दिस वन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज x बाय x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1. सो आप इधर गलती से inner and you cross multiplication ಮಾಡಿದ್ರಿ, then your answer will be wrong because you don't know na x value क्या है, plus or minus. Yes or no? Because you need to bring this total expression to the left side. तो क्या होगा, x divided by x plus 4 minus 1 divided by x plus 1 is less than or equal to 0. Now solve this equation. So one side you can solve, cross multiply करो, ಏನಾರೆ ಮಾಡ್ರಿ one side ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ. So x into x plus 1 minus 1 into x plus 4, denominator ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ, x plus 4 and x plus 1 is less than or equal to 0. next ಇಲ್ಲಿ solution ಮಾಡ್ರಿ, x into x x square, x into 1 x, minus 1 into x minus x, minus 1 into 4 minus 4. clear. divided by x plus 4 into x plus 1. now it is less than or equal to 0. x square plus x, a cancel, x square minus 4, ये -4 कैसे लिख सकते हैं आप, हाथ से 2 स्क्वायर लिख सकते क्या, तो -2 स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, वो भी लिखो आप, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 4 एंड x प्लस 1, इट इज लेस देन और इक्वल टू 0. क्लियर. सो नाउ राइट डाउन, ये बॉक्स जरा ऐसा हुआ, डोंट वरी. x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या होगा, x माइनस 2 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय ಇದೇನಾಗುತ್ತಾ x प्लस 4 and x प्लस 1, इट इज नथिंग बट लेस देन 0. अभी फैक्टर्स आए ना बाबा, फैक्टर्स आया तो इसका ऑप्शन आता है, तो इसका आंसर आप फाइंड कर सकते क्या, फाइंड करो बस. इसका आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 2 x इक्वल टू -2, दीज आर डॉटेड. नेक्स्ट x is equal to -4, x is equal to -1, these are the solution. so आप इसका ओपन ऐसा करके आप करो, आपका आंसर आसान से आएगा. क्लियर. सो वेरी इजीएस्ट है, आप कर सकते. नेक्स्ट आप आई होप क्लियर. so up to this all clear. in the next class number of solution is there, how many numbers are there, how many integral values are there for the given equation. Clear. so I hope you all clear this wavy curve method for the first step. so whatever the range, domain and function JEE level, I will take the questions and I will solve on it. so I hope this is my Instagram ID and this is my YouTube channel name.